Please. Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swami Niti Namine Namayom Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasatu Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasatu Deshatarine Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Jayo Prabhupada
Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Srila Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. My respects to the all Vaishnavas in here. So, Hare Krishna. Let's start with a nice prayer to Sri Gurudev. Can you hear? Everybody can hear, okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalim Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamne Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivrisesa Sunavadi Bhaskacharya Satanine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Svasati Gauravachavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Prabhupada. Okay. Today is being an interesting day, as every day. So besides all the raining and everything, we're here. So much stories, anyway, let's carry on. Today, our podcast theme is real culture. Real culture. That's interesting. You're translating, right? Yeah. This time, I'll go slow. Yeah. Okay, so let's start. Yeah. Okay. हरे कृष्णा। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल कल्चर, मतलब वास्तविक संस्कृति हमारी क्या है। यस प्रभु जी। So when we talk to the culture, we have here, of course, modern culture and Vedic culture. And we're going to talk about the difference between them. And how, hold on, and how using modernity, we still can spread Krishna consciousness. We're not against modernity, we're against the misuse of modernity. Okay. तो आज हम जानेंगे, हम जैसे सुनते हैं कि दो तरीके की जो कल्चर संस्कृति होती है, एक जो मॉडर्न जो आजकल चल रहा है और एक जो वैदिक पुराना था वो जो चल रहा है, और उन दोनों के बीच का अंतर हम जानेंगे। और इन दोनों की मदद से मॉडर्निटी की जो आज जो वास्तविकता जो चल रही है उसकी एक जो नया वास्तविकपन जो चल रहा है उसकी मदद से हम कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, उसका कैसे हम मदद ले सकते हैं और कैसे उसका मिसयूज भी होता है, उसके बारे में जानेंगे। यस प्रभु जी। So we're going to define culture a little bit, like not just dress, trends, or entertainment, but the values that shape our culture, behavior, and purpose of life. This is culture, see, thinking, behavior, and purpose of life. At the last, what you said, Prabhuji, sorry, after the behavior. Okay. Can you please repeat after behavior Okay. what you said? I didn't hear clearly. We're going to define culture, not just dress, trends, or entertainment, but the values that shape our thinking, our behavior, and purpose of life. You see, how do we think, how we behaving, and the purpose of life. This defines our culture, any culture. Okay. कोई भी संस्कृति जो होती है उसमें हम एंटरटेन का जो हिंदी होगा मुझे नहीं पता उसका, सॉरी, तो आप ऐसे तो हो जाएगा आपका, आप समझ जाओगे। और उसका जो एक असलियत क्या है, उसका कैसे शेप बनता है, कैसे हमें हमारी लाइफ में कैसे काम आता है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो सोचने का तरीका है, और वो बताता है कि हमें
ये चीजें हमें दर्शाती है और हमारे हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है उसे भी सब बताता है हमारी संस्कृति। यस प्रभु जी। Okay, so what is the main idea here? Well, real culture is that which uplifts the consciousness towards God, the supreme personality of God. This is real culture. Everything else is less than a good culture. This is wanting something. So real culture, it uplifts the consciousness towards the Lord. तो यहाँ पे मेन एक जो आइडिया जो ध्यान में रखेंगे कि क्या जो संस्कृति है, असली संस्कृति क्या है, वो ये है कि हमारी जो चेतना है वो भगवान की ओर बढ़े, उस तरफ हमारी चेतना जो बढ़ेगी वही हमारी रियल कल्चर, वही हमारी वास्तविक संस्कृति है। यस प्रभु जी। Okay, so now we're going to talk a little bit of the contradictions and the idiosyncrasies. That's a tough word in there. Idiosyncrasies. You know, those little things that make something what it is. Okay. Between materialism and Vedic culture. Start with A. Materialism as a success. Okay. या ओके, अभी हम कुछ कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे जो हमारे दो तरीके, जैसे मटेरियल, जैसे भौतिकतावाद है वो, और एक जो वैदिक कल्चर जो है, हमारा वैदिक संस्कृति जो है, इन दोनों के बीच का जानेंगे। उसमें से जो पहला है, जो हमारा भौतिकता जो है वो हमें दर्शाती है हमारे जो सक्सेस मिलती है, हमें जो सफलता मिलती है उससे। अभी आगे और देखेंगे, ये पॉइंट पहला है। यस प्रभु जी। So, modern society equates success with consumption, possessions, and speed, right? How much can you buy? The power of your buying your money, how much you possess, how many houses, what kind of car is that? A best car, right? And speed, how fast you go in life in the fast lane, in other words. ये जो मॉडर्न जो है, मॉडर्न जो संस्कृति है, उसमें ये ज्यादा देखा जाता है कि हमें क्या सफलता, हमें कितनी प्राप्त हुई है, हमारे पास क्या चीजें ज्यादा है, हमारे पास कितना एक पावर है, हमारे पास कितना पैसों का पावर है, हम कितने संपत्ति खरीद सकते हैं, हमारे पास कितने हम गाड़ी चीजें जो है हम खरीद सकते हैं, हमारे पास बेस्ट बेस्ट होना चाहिए। और दूसरा जो है कि हमारे पास कितनी स्पीड, मतलब हमारे पास कि हम कितना चीजें जल्दी खरीद सकते, कितना जल्दी अपने लाइफ को चेंज कर सकते, वो सब चीजें दर्शाती है मॉडर्न तरीका, मॉडर्न संस्कृति। यस प्रभु जी। The other thing, like we talk materialism as success, information overload. We live in an age that is information overload, but little wisdom. A lot of nonsense. You just go on TikTok, you see, right? It's now, I remember when Facebook came up, I was so happy to get a notification. You got some friend, you got some notification there. Let's see what they say. Now I can have like 100 a day. And right now, I know, no, out, delete everything. I don't want anyone. Don't talk to me. Leave me alone. It's so much information. We want information, of course, for those things that are important, that uplift our consciousness, that we keep. But there's a lot of things that doesn't help us very much. So there's an information overload. We're overloaded on information. अभी जो इसमें मॉडर्निटी में, मटेरियल लाइफ में, अभी जो हमारे पास जो जानकारी होती है, जो सूचना होती है मॉडर्न लाइफ, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जैसे, और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, लेकिन जो ज्ञान है बहुत कम ही रह जाता है। जैसे प्रभु जी ने जो यहाँ पे उदाहरण बताया, जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है, ये चीजें यूज करते हैं, अचानक से ऐसा इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचना बढ़ती जाती है हमारे जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, और बहुत सारे फॉलोवर्स वगैरह हमारे बढ़ते जाते हैं, और अचानक से सब कुछ एक बार से सब गायब हो जाता है, या फिर तो हम भी चाहते हैं कि हमने
छोड़ दो हमें अकेला, एकदम अचानक से सब कुछ खाली पंसा हो जाता है। यस प्रभु जी। So we have more data than any generation. You, all of you, we have more data than any generation before, but less clarity and peace. This is just agitation, which has a reason to agitate, more clicks and all that good stuff. ओके, आज हमारे पास और भी जानकारी है, उससे ये पता चलता है कि आज अभी का जो जनरेशन, अभी का जो समय चल रहा है, उसमें ऐसा है कि लोगों के पास मतलब क्लैरिटी, मतलब चीजों को इतना क्लियर उनके माइंड में चीजें नहीं है उनके, और वो जल्दी से बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं किसी भी चीज को लेके एजिटेट, मतलब एक नेगेटिव फॉर्म है एजिटेट को लेके, वो बहुत बहुत जल्दी से ऐसे हो जाते हैं कि हाँ अभी हम क्या करें, इस टाइप से हो जाता है। यस प्रभु जी। So the mind is constantly distracted by screens, reels, quick entertainment, quick fix, right? You know that reels, you can stop it one after the other. You can spend 1-2 hours, you don't even know the time passed. या आजकल के समय में ऐसा हो रहा है कि हमारा जो दिमाग है ये हमें ऐसा बन गया है कि वो बहुत जल्दी मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कोई भी चीजों से, और सबसे ज्यादा भी जो चल रहा है कि हम जो स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा स्क्रॉल अप एंड डाउन करते रहते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, हमारा जो मूड है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसे करते करते हमारा 1 घंटा 2 घंटा हम कहाँ ही हमारा बीत जाता है। यस प्रभु जी। So I walk around here in Malaysia, in India also, even in village of Mayapur, everybody is, even I go in the market and there is no customers, the people working or the boss, they kind of, it's pacifying the mind. Imagine sitting there waiting for a customer, so they pacify the mind, entertaining in the phone. So it's a mystical, it's a power, it's Maya. It attracts, just make sure it attracts for Krishna. We have to move around to Krishna, which is very hard, but doable. ओके या प्रभु जी अभी बता रहे कि प्रभु जी ने बहुत जगह ऐसा देखा है, जैसे उनके जो देश है मलेशिया में देखा है, भारत में देखा है, मायापुर के कुछ गांवों में भी ऐसा देखा है कि जब वो मार्केट में जाते हैं, जैसे कोई जैसे मार्केट में ग्राहकी जैसे कम रहती है, तो दुकान वाले जो बैठे रहते हैं वेजिटेबल्स वाले, वैसे जो ऐसे बैठे रहते, तो वो अपना दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक अलग ही एक अपनी दुनिया ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, वो फोन में ही पूरे दिन लगे रहते हैं, एक अलग ही उनका माइंड सेट एक अलग हो जाता है। तो ऐसे ये अलग चीज, ये चीज बताती है कि माया जो है वो कितनी ताकतवर है, कितनी पावरफुल है, कि वो हमें कृष्णा से दूर ले जा रही है। यस प्रभु जी। So I give example. People living simple. Even in Mayapur, you have very simple and very sophisticated. Everybody's living there, the foreigners, the local Bengalis. So I have this coward boy. We used to have cows, Mataji. One day I went to Mataji, said, "Here is a cow. I gave you the rope." It was a cow in there, Subhadra. Said, and I went up to Korea to work, and she was hanging there with the cow in the hand. And she didn't, she was a sophisticated girl from airlines, and now she has a cow to take care. I don't know how I did that, but she's faithfully created a system, took care of the cow. We got up to a point of 10 cows. It grows, it's amazing, because they have babies and milk, and we give half of the milk, morning milk, we give it to Radha Madhava. And in the course of like maybe 12 years, we gave 17,000 liters of milk to Radha Madhava. We have a whole system. Mataji was very good in managing. So anyway, we have this cover boy, Prabhu. Okay, so that cow boy is different, and that Mataji who is handling all these things, cows and the milk separate. Yes, cover boy, no. Mataji manages the cover boy, yeah. Okay, all right, okay, yeah. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि मायापुर के गांव में प्रभु जी ने जैसे देखा कि जो ग्वाले होते हैं, जो प्रभु जी जो ग्वाले होते हैं, वो प्रभात जैसे नाम बताया,
उनको मैनेज कर रहे, उनको संभाल रहे हैं कोई माता जी जो बाहर से आई, और वो सारी चीजों को संभाल रही है, और जो गाय वगैरह होती है उन सबको, और वो डेली, तो उन्होंने कैसे क्या चीज मैनेज की, और वो दूध निकालना वगैरह, और वो दूध की जो सेवा होती है वो राधा माधव के जाती है, और पूरा टोटल मिला के लगभग प्रभु जी ने 1 साल का बताया तो 17,000 लीटर, दैट 17,000 लीटर एट फॉर 17,000 liters. Yes. All the morning milk every day going to एवरी Radhaman. डे। Yes. There was a whole system. Yes. It's beautiful. We love it. तो 17,000 जो है पूरा, ये पूरा आंकड़ा जो है वो डेली हर रोज राधा माधव को वहां पे जाके उनको समर्पित होता है, ऑफर होता है। तो वो माता जी कैसे मैनेज करते हैं, बहुत ही पता नहीं कैसे करते, प्रभु जी बताएंगे। यस प्रभु जी। So Prabhu was a small kid, you know. Now he's a big man. I think he's married and everything. He got a big panza, a big belly, so rice belly, big belly. He eats bora rice, you know, the fat rice. So we went to his house, and he has a very, what do you call, a simple house, you know. It's half bricks, half thatched. He has his cows also, right? He take care of our cows, he take care of his cows. So, and then we went there, so we take a little, he offer prasad, a little milk, you know, like that. Okay. So you went to the Prabhu's house, and there Yes. was a, It's and in they offered Mayapur. you milk and all. Okay. Yeah, we sat down and we start talking. We good friends, Okay. you know. I know his mother, he has brothers, you know, like that. ओके यस, सारे प्रभु जी यस। तो प्रभु जी बता रहे कि जो प्रभात है, जो ग्वाला है, वो पहले छोटा था, अभी वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी वगैरह भी हो गई है। तो हम उनके घर गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारी गैयां भी रखी हुई है। तो हम सब ने वहाँ पे, हम सब बैठे मिले उनसे, और उन्होंने हमें जो दूध होता है उसका प्रसाद भी हमें दिया। यस प्रभु जी। So in the conversation, so I asked him, so how do you eat? You know, and what is it that you eat? What is your food consumption, you know, around here? I was curious. Okay. ओके। तो प्रभु जी ने वहां पे बातचीत में उनसे पूछा कि तुम्हारा जो दिनचर्या है, जो तुम्हारे दिन का जो खान पान है, वो तुम कैसे लेते हो, कैसे तुम्हारा दिनचर्या चलती है, क्योंकि प्रभु जी भी ये जानने के लिए उत्सुक थे। यस प्रभु जी। So he's saying that he has, you know, his brothers, he has mother, father, he has uncles, you know, it's a kind of standard Indian family. So he needs 3 kilos of rice a day. Now sounds a lot, but it's a Bengali guy and Bengali family, and they eat like 3 times a day, you know, something like that. Oh yes, Antara, she's nodding. Yes, yes. I was like shocked, you know, 3 kilos. I take like 1 cup, half a cup sometimes, you know. 1 cup goes for our little situation here, but you know, he's using that. It's a standard family, whatever. And I was surprised, and I said, "How we do it?" ओके। तो प्रभु जी ने उनसे जो पूछा कि तुम्हारा कैसे चलता है पूरा दिनचर्या और खान पीने का कैसा चलता है, तो उन्होंने बताया, जो प्रभात है उन्होंने बताया कि उनके जो फैमिली मेंबर है, जैसे उनके घर वाले, जैसे उनके माता है, पिता है, उनके अंकल है, भाई है, सब जो भी मेंबर्स है, वो हर दिन 3 किलो जो है वो चावल का उनका, मतलब इतना कंजम्पशन, इतना उनका जाता है, क्योंकि वो एक बंगाली फैमिली है। तो और दिन में 3 बार उनका खाना होता है। तो प्रभु जी ये जानकर बहुत शौक थे कि ये कैसे होता है, क्योंकि प्रभु जी के यहाँ पे जो है वो कंजम्पशन, वहाँ वहाँ का खाना पीना जो एक क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ पे बंगाली फैमिली में ज्यादा होता है। यस प्रभु जी। So I was thinking, no, well, you buy up rice in the market, you know, 3 kilos every day is expensive. You know, he used to take care of the cows. Then he went to drive a rickshaw. You know, he was doing his thing. But he said, no, I don't buy rice in the market. तो प्रभु जी ने कहा कि तुम जैसे मार्केट में जाते हो, तो वहां पे तुम डेली खरीदते हो चावल वगैरह, और तुम ध्यान भी रखते हो सारी चीजों का, और अपना ऑटो रिक्शा जो है उसका भी तुम संभालते हो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं डेली जाके चावलों का खरीदी नहीं करता हूँ।
Yes, प्रभु जी. So then I said, so how we do it? He said, well, we have some katas of land. He's a Bengali boy. Family is in Mayapur for a long time. So you have few katas, maybe 5, 10 katas. I plant, and I know for 3 kilos, I have to plant so many katas. And each kata gives so many kilos of rice. So I have to, it calculates like 3 months ahead, and he plants the rice, and the rice he plants, that's the rice he eats. There is some left, he exchange with subji oil, all the other things. The subji actually he plants and he has a little subji he collects here and there, like that. Okay. तो जैसे प्रभु जी ने बताया, जो प्रभात प्रभु जो है वो बता रहे थे कि हमारे पास कुछ ऐसी जमीन है जो 5 एकड़ 10 एकड़ की है, तो उसमें हम हमारी खुद की जमीन, हम खुद ही उसमें चावलों का हम उगाते हैं उसे। और हर हर एक जो है, जैसे 5 एकड़ 10 एकड़, तो हर एकड़ जो है हमें बहुत सारे चावल का हमें खेती देती, बहुत सारे हमें चावल उग जाते हैं उसमें। तो ऐसे कैलकुलेट, ऐसा पूरा गिनती करके 3 महीने का जो होता है, उससे 3 महीने में जो चावल उगते हैं, ऐसे हम करके हम पूरा मैनेज करते हैं। और जितना हमको चाहिए उतना हम ले लेते हैं, और जो बाकी जो बचते हैं चावल हमारे यूज हो जाते हैं उतने रखते हैं, बाकी जो चावल बचते हैं उसे हम हमारी जो सब्जी वगैरह खरीदना होता है उसमें हम एक्सचेंज, मतलब लेन देन में हम उसे जैसे सेट कर देते हैं। यस प्रभु जी. So my question, each one of you, who is the one that plants his own rice to eat every day? तो प्रभु जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन कौन है जो हर रोज चावल खाने के लिए हर कोई खुद उगाता है? ऐसा कोई है यहाँ पे? Nobody. Neha, no plant. Neha, okay, I got you. So I thought nothing can be more simple than that, but that is quite amazing. He may be simple, or from Western stand, he may be poor, but he's smart. He's totally self-sufficient. He goes there, plants his rice. If there's a problem with the crop, he's gonna eat less, and everybody's gonna sacrifice a little bit. Probably now you have to buy few rice in the market. They manage, but this is in good times. That's how they survive. Okay. तो प्रभु जी ने बताया कि हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ही ऐसे सादा इंसान हो या फिर बहुत ही गरीब इंसान हो, ऐसा। लेकिन वो असल में देखने जाए तो वो बहुत ही बुद्धिमान इंसान है वो, क्योंकि वो सारी चीजें खुद ही उगा रहा है और खुद ही स्वयं खा रहा है। और हो सकता है कि वो अपने फैमिली में वो शायद थोड़ा कुछ बीच कैसा, मतलब कुछ ऐसा सेक्रीफाइस ऐसा कुछ कर देता हो कि मैं उनके जो बाकी मेंबर्स है वो ज्यादा खा सके और वो कम हो सके। ऐसा कुछ मैनेज वो जैसे तैसे वो करते हैं। और अभी तो वो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वो बाहर से भी चावलों की खरीद के वो खाना उन्होंने शुरू कर दिया है थोड़ा बहुत अभी। यस प्रभु जी. Now, I plant rice before. The temple let me use, I think it was a couple of bigas in the Tarampur Road, and I plant rice. I got 3 tons of rice, and the rice we used to, and the milk for the evening milk, we make sweet rice. We give to the children. We have a school for children. We will give it to them, not like that. We, like that. We sold the rice to pay for the debt of doing, the rice fields and everything. So I learned it's very satisfying to plant your own rice. We used to eat rice at home and said, we plant this rice. We manage the rice we plant. And I learned something quite interesting in that agricultural adventure. ओके. तो प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी के यहाँ पे भी कुछ इन्होंने चावल का उपजाव जो होता है उसका खेती उन्होंने की थी। तो उसमें 3 टन जो 3 टन जो है वो चावल का उन्होंने उपजाव किया था। जो मतलब जो मंदिर की जो जगह है उसके पहले उन्होंने उस जगह पर किया था। तो वहां पे ऐसा, और ये भी था कि जो दूध है उसका भी वो कुछ ऐसा व्यवस्था करते थे। हर शाम को स्कूल के बच्चों को जो होता है उनको भी वो देते थे। और जो जो चावल होते थे उन्हें खुद उगा के वो मार्केट में बेचते थे। तो उनसे प्रभु जी को ने बहुत कुछ सीखा, और उन्हें इस चीज से ये सब कार्य करके उन्हें बहुत संतुष्टि मिली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला।
और ये चीज ऐसा हो इनके अंदर ऐसा था कि हाँ ये चावल हमने उगाए हैं, इनको बहुत ऐसे सेटिस्फेक्शन मिला। यस प्रभु जी। So, for the sake of information, I give a little bit of the conclusion that when you plant rice, at least in Bengal, you see, if you're going to plant rice, you have to plant for yourself, because if you want to organize and pay the laborers everything, it's such a small margin. You have to plant a lot of land to make the small margin if you're going to pay the workers, and the workers are very greedy, you know, they're amazing. So I was thinking, you know, that's how they make money. So the guy has this land, he cultivates his own rice. The money, he sells the rice, and the money that comes from the rice he is selling, he's paying himself his own salary. That's how it works. So therefore, they have a lot of patches in Bengal. Each one cultivate their own rice, and the money, the labor they put in, that's all they get back from selling the rice to the crops, to the cooperatives. तो अभी प्रभु जी बता रहे कंक्लूजन में कि अगर आपको चावल उगाने हैं, चावल की खेती करनी, तो वो आपको खुद के लिए करनी होगी। अगर आप बड़ी सी एक जगह पे, बड़ी सी एक जमीन पे अगर आप उगाएंगे, और उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग अलग हिस्से भी होते हैं कि आपने चावल को उगाया, आपने खेती की, और आपके यहाँ पे जो भी वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं, तो उनको उनका मेहनताना भी देना होता है, और वो कितने लालची होते हैं तो उनको ज्यादा देना पड़ता है। तो इन सब से जो उसका जो खुद का जो प्रॉफिट जो निकलता है, मार्जिन जो निकलता है, वो बहुत कम निकलता है। तो उससे उनको इतना मुनाफा नहीं हो पाता है, इनकी खुद की लैंड है। तो इन सारी चीजों से वहाँ पे बंगाल की जो धरती है उस पर ये हो रहा है कि जो चावल जो उगाना है उन्हें खुद के लिए ही उगाना पड़ता है। यस प्रभु जी। So we're going to go back to the cultural. See, this is part of the culture. In the West, they have these machineries, and they have incredible fields, large, mega acres, mega machines doing all the work. One man, he does the work like 100 men. So this is another story. We're going to go back in here, and now we talk about materialism as a success. We have information overload. We have independence without harmony. Okay? Materialism promotes be yourself, even at the cost of relationships and responsibility. तो अभी प्रभु ने बताया कि ये जो हमारा पूरा हमने जो पार्ट देखा, ये हमारा जो संस्कृति है उसका एक पार्ट है। और अभी तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी मशीनें निकल गई है जो बहुत बड़ी बड़ी जमीन पे, बहुत एक साथ में बड़ी बड़ी सी मशीन जो होती है, बड़ी बड़ी जमीन पे बहुत एक साथ में काम कर देती है। एक इंसान काम करता है, अगर एक इंसान काम करता है तो वो 100 लोगों के बराबर का काम करता है। एट द एंड व्हाट यू से प्रभु जी, इंडिपेंडेंट that point. Independence without harmony. It's not harmonious independence. It's actually you promoting yourself. It's kind of selfish. I remember we're doing Sankirtan, you know, in America for Mayapur, and we had this jokingly, you know, saying, "Do what you feel what you like." This is the ultimate independence. Do what you feel what you like. This is the ultimate independence. But is that actually independence that bring happiness or bring anxious conclusion in your life? Okay. तो प्रभु जी अभी एक उदाहरण जो बताया कि प्रभु जी एक बार अमेरिका देश में गए थे, तो वहाँ पे जो संकीर्तन वगैरह करवाया था, तो वहाँ पे ऐसा बताया था कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वही तुम सोचो, वही तुम महसूस करो। तो क्या ये असली हमारी वास्तविकता, हमारी स्वतंत्रता है? क्या यही है? ये चीजें हमें असली वास्तविकता, स्वतंत्रता नहीं देती है। यस प्रभु जी। So this leads to loneliness, anxiety, and lack of meaning. Lack of meaning is the primary problem with the materialistic society, because the meanings of your life keep changing. Suddenly, you just don't trust any meaning, and you become very depressed. And there's a lot of medicine for depression in the society. We take some pills, fix it up, and it gets going down the hole
of depression and loneliness. You have no connection, real connection, like that. और इन सब से जो होता है कि हमें अकेलेपन का ही हमें हमारे जीवन में सामना करना पड़ता है, एक खालीपन जो होता है उसका सामना करना पड़ता है। और इससे जो वास्तविक जो अभी लाइफ जो चल रही है उससे ये होता है कि हमारे जो हम किसी पर विश्वास करते हैं वो भी हमारा विश्वास टूट जाता है। तो हम इन सारी चीजों से एक डिप्रेशन का एक जो मोड होता है उसमें हम चले जाते हैं। फिर इन सब से निकलने के लिए हम दवाइयाँ वगैरह का सहारा लेते हैं, उससे भी हम धीरे धीरे नीचे ही जाते रहते हैं और फिर से हमें अकेलेपन का और खालीपन का ही सामना करना पड़ता है। Definitely. So I'm going to go back and get the last one. Materialism as success. Then we have information overload, but little wisdom. Then we have independence without harmony. Then we have the crème de la crème. Hedonism disguised as freedom. Hedonism. Now, hedonism is a kind of behavior that is degraded that you can do, and that's considered freedom. So you can, I think you know what it is, right? Should I go and look at this word because Okay, sir. Yeah. Okay, तो प्रभु जी ने बताया कि अभी हमने जो चीजें यहाँ पे जानी उसे शुरू से एक बार वापस से पूरा पॉइंट सारे लेंगे यहाँ पे। जो पहला पॉइंट जो बताया था मटेरियलिस्टिक जो भौतिकता जो हमारा जीवन चल रहा है वो, उसमें फिर बताया था कि हमें जो सक्सेस जो होती है सफलता, वो फिर उससे बताया कि sorry what you said after that success I forget it, information, yeah sorry, yeah, कि हमें जो हमारी बहुत सारी जो जानकारी होती है, बहुत सारी जानकारी इतनी ज्यादा हो जाती है लेकिन हमारे जो पास जो ज्ञान है वो थोड़ा ही बचता है। फिर ये सारी चीजें दर्शाती है कि हमारा जो बिहेवियर जो हमारी जो स्वभाव है वो ऐसा होता है कि वो दिन ब दिन कम होता जाता है और हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता, ये हमारी फ्रीडम है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। यस प्रभु जी। hedonism is the manifestation of super materialism? It means the belief that pleasure is the main goal of life. Exactly opposite what we as devotees are. Pleasure is the main goal of life. It means Okay. I should enjoy as much as possible. I feel good to do it. Life is meant for pleasure, comfort, and enjoyment. Dungo. ओके, अभी प्रभु जी ने बताया कि हाँ ऐसे करते करते हम जब आगे जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे हमारे जीवन की जो वास्तविकता है वो हमें है प्लेजर, मतलब हमें जो खुशी जो संतोष जो मिलता है वो हमारे जीवन में हमें अच्छा महसूस होना चाहिए। हमें कंफर्ट का हिंदी क्या होगा मुझे नहीं पता, कि कंफर्टेबल होना चाहिए हमारी लाइफ में, हमें सब अच्छा ही महसूस होना चाहिए हमारे जीवन में। यस प्रभु जी। So you all be careful, because this mentality of hedonism is propagated by the media, by movies, cinema. You see, you have subtle. They're not saying, "Oh, you should be like this," but they show the hero engaging all these things, and everybody wants to be the hero, right? So you assume some of the qualities of the so-called hero. The only hero is Prabhupada and the Guru Parampara. We should follow their path. ओके, अभी प्रभु जी ने बताया कि हमें इन सारी चीजों से बहुत बचना होगा, ध्यान रखना होगा कि हमारे आसपास में जो चीजें हैं, जो मीडिया है, मूवी सिनेमा है, ये इन सारी चीजों को बढ़ावा दे रही है दिन ब दिन। और ये बहुत ही सूक्ष्म रूप में होती है, हमें चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन हम पर असर करती है। और जैसे मूवी सिनेमा हम देखते हैं उसमें कैसे जो हीरो है वो इन सारी जैसे वो एक्टिविटीज करते रहते हैं, उन सब में ही वो लगे रहते हैं और हम भी वो चीज देख के उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनसे सीखते हैं। लेकिन ये सारे हीरो असली हीरो नहीं, हमारे असली हीरो हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारी संपूर्ण गुरु परंपरा है। तो उससे उन्होंने जो हमें रास्ता बताया हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। यस प्रभु जी। So people say, "This is my freedom," and then doing nonsense. That is hedonism. We move into the next. ओके, और लोग कहते हैं कि ये ये हमारा असली वास्तविकता, हमारी असली फ्रीडम है, हमारा स्वतंत्रता यही है।
Yes, Prabhuji. So the last one is a culture of speed. Materialism is a culture of speed. Fast food, fast fashion, fast relationship, fast entertainment, no depth, no reflection. Even in China, you have a thing called fast marriages. They come in, sit down, talk a little bit, boom, boom, boom. Yes, this is a marriage, boom, stamp, next. That's like that. No astrology either. Oh, sorry, Prabhuji, what you said before the marriage is how fast they engage in that few activities like. No, actually marriage. But they just sit, look at each other, looks good, boom, marriage. They register the marriage, next, they have this thing called fast marriage, in the spur of the moment, and real marriage, but how good is that? So Okay. it's a So culture of speed, fast, fast, fast. That's called mother passion. Passion means fast, but how fast yeah. can you go before you bunk your head somewhere in the wall? ओके, तो अभी प्रभु जी बताइए कि जो आजकल की जो संस्कृति का जो समय चल रहा है वो है स्पीड, मतलब कितना जल्दी तुम कोई भी चीज कर पाओगे, हाँ कितना भी जितना जल्दी तुम जो भी चीज करोगे मतलब तुम उतने ज्यादा मॉडर्न हो, उतने ज्यादा तुम अच्छे हो। जैसे कुछ चाइना का कुछ यहाँ पे उदाहरण बताया कि चाइना में बहुत चीजें जल्दी खाना पीना जल्दी जल्दी ये जल्दी वो जल्दी सारी एक्टिविटीज होती है। उसमें से एक उदाहरण जो मेजरली यहाँ पे बताया है कि जो शादी शादी इतना जल्दी करते कि आए बैठे दो जन शादी किए ये हो गया, अगर नहीं जमा ठीक है तो फिर दूसरा देखेंगे। वहां पे कोई हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसका कोई काम नहीं होता है वहां पे, बस वो फटाफट सारी चीजों को जल्दी 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 स्पीड का एक जमाना आ गया है, जैसा ऐसा लग रहा है। यस प्रभु जी। So, since you all live in India, thanks the Lord, is not so fast, even though they try to make fast. So ओके। it's true, and it's good it's not fast, because then we can go slowly to what we want to go. Because what is the hurry? We have a lifetime to learn devotional service. So now we're going to go, what is Vedic culture? We're going to see the other side of the equation. You see, that is the other side of the culture. This is real culture. ओके, प्रभु जी ने बताया कि जैसे चाइना में जितना ये जो स्पीड का जो जमाना आ गया है, थैंक गॉड भगवान का शुक्र है कि भारत में ये चीज जो है जितना स्पीड का जो जल्दी जल्दी चीजें हो रही वो अभी समय नहीं आया है, भगवान का शुक्र है। और इतनी जल्दी क्या है मतलब ऐसा भारत में है कि अभी भी धीरे चीजें थोड़ी चल रही है, तो हम अभी भी हमारी जो संस्कृति है उससे भी अभी भी हम सीख रहे हैं जान रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारी वास्तविक संस्कृति उसके बारे में हम जानेंगे। यस प्रभु जी। So the culture is originally designed to uplift the consciousness. Varnashram, how the society is divided according to consciousness, not according to some material designation. Okay, so we want a system, a societal system that erases the consciousness, not just of the individual, but the whole society as a whole. Okay. अभी हम जानेंगे कि हमारी जो वैदिक जो हमारी संस्कृति है, वो जो संस्कृति है उसका एक असली जो मकसद है वो है कि हमारी जो चेतना है इसे उठाकर भगवान की तरफ लेके जाना। और ये कुछ अलग अलग वर्णों में जैसे बांटा गया, जैसे हमारा वर्णाश्रम जो एक सिस्टम है वो, और जैसे वो कैसे चलता है कि हमारी जो पूरी जो सोसाइटी पूरा जो समाज है वो उसे वर्णाश्रम में बांटता है अलग अलग। वो भी उनकी हर एक पर्सन के चेतना पे डिपेंड है कि फिर उसे वो अलग अलग भाग में बांटता है, ना कि उसको जैसे कि आजकल जो चल रहा है कि मतलब राजा का बेटा राजा जैसे जो चलता है वैसे नहीं होता है, उसके हर एक की चेतना पे चलता है काम। और हमारे पास आज ऐसी सोसाइटी के हम हर एक की चेतना पे काम जैसी होती है वैसे आगे बढ़ते हैं, उसे उसी आश्रम में रख के चलते हैं। यस प्रभु जी। So I make a little parenthesis here to
introduce few ideas. Okay, the Vedic culture to uplift consciousness, and as opposed to the material consciousness of speed and shallowness. So we bring now the first item of this uplifting the consciousness, simple living and high thinking. This is very important. To live simple is a complicated matter. Trust me. Because we have to get the anarthas out. That is complicated. We're attached, you see? But once we do with less, we become more enthusiastic because we have all these things on top of our shoulders. It's amazing how many ideas, how many trash you have in a house. No, good things, but they should flow. They, when you don't use anymore, or if you're not going to use in the future, you should give it to people around you, so you have new things coming. That's good for your life, and the old things, you let it go. I have an example of that. Remind me of the example. Go ahead, Mata. ओके या प्रभु जी। तो प्रभु जी आपने बता रहे कि अभी वो एक जो वैदिक कल्चर, जो वैदिक संस्कृति जो है, उसके बारे में एक आइडिया यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो उसमें ऐसा है कि जो वैदिक जो हमारी संस्कृति है, उसे हमारी चेतना को ऊपर उठाना है, और उसका ही उल्टा जो अभी जो चल रहा है मटेरियल, जो भौतिक संस्कृति जो चल रही है, वो उसका पूरा उल्टा है। वो हमें मतलब एक खालीपन, एक अकेले का एक खालीपन सा हमारे जीवन में ला देता है। और इसी को हम आगे समझेंगे कि अभी इसको, इन सारी चीजों को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। जो आइडिया प्रभु ने दिया है, उन्होंने एक लाइन बताई, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में हम जो भी जिएंगे, वो हम एकदम सादा जीवन जिएंगे, और हमारे जो विचार है वो उच्च विचार रखेंगे। क्योंकि सादा जीवन जीना, ऐसा लगता है कि वो जो सिंपल है, सादा जीवन जीना आसान है, वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल जो चीजें चल रही है वो बहुत अटैच कर देती, मतलब एक दूसरे से लाइक बहुत ही अट्रैक्शन ऐसा ला देता है, तो मुश्किल होता है कि सादा जीवन जीना। यस प्रभु जी। So, when I was living in Orlando, Florida, we used to have a program that we used to distribute prasadam. Okay, so, I live in a house. I couldn't cook for people in the house. So we contract a vegetarian restaurant, an Indian guy, which is a friend of Krishna. So he used to cook a big pot, those round big pot, of what he used to cook was, I think was khichdi, and, we make some bread, we have some drink, we cook some nice pots. And I used to have a van, and I take in the van, I go to this particular spot to distribute. And I get there, people waiting there, line up, ready to get the prasada. It was one day of the week that we go in there. And my son, Narayana, he was very enthusiastic in distributing the prasada. Wonderful. Yeah. In which country you went there? Orlando, Florida, America. Yeah. Okay. तो प्रभु जी ने बताया कि जो अमेरिका देश की एक जो सिटी है फ्लोरिडा, उसमें जब प्रभु जी वहां पर जब रहते थे, तो वहां पे कुछ प्रसाद का जो वितरण करने की जो सेवा होती थी, तो उन्हें वो प्रभु जी सेवा देते। तो वहां पे प्रभु जी को सेवा देनी थी, तो उन्होंने वहां पे किसी को खाना बनवाने के लिए बुलाया था बड़े पैमाने पे। तो जो भारतवासी ही कोई थे वहां पे बनाते थे वो। तो वो बड़े पैमाने पे एक बड़े से जो बर्तन होता है, उसमें बहुत सारा उन्होंने प्रसाद बनाया। तो उसमें खिचड़ी होता है, जैसे अपना रोटी होती है वो बनाया, और कुछ पदार्थ से पेय पदार्थ जो होता है, ड्रिंक मतलब अपना जूस टाइप का वैसा बनाया। तो वो ऐसा सब बनाते थे अच्छे से, और प्रभु जी एक बड़ी सी एक वैन में वो सारा ही जो प्रसाद होता है वो लेके जाते थे, और एक अलग सी जो पर्टिकुलर जो एक जगह होती थी, वहां पे जाके उन सारी चीजों को, प्रसाद को वितरण करते थे। और वहां पे जैसे ही लोग आते थे, लाइन में लग जाते थे वो सारा प्रसाद को लेने के लिए। और एक हफ्ते में वो एक बार ऐसा करते थे। और प्रभु जी के जो लड़के हैं, वो भी इन सारे एक्टिविटीज में जाते थे उनके साथ, उनको बहुत आनंद आता था ये सब करने में। यस प्रभु जी। Bahut Ananda. Yes, correct. So, I remember this old lady. She was like a grandma, nice lady.
she let us use her house. We keep the tables in there like that, the spoons, everything. So when we come in, the tables are set up, the spoons, everything that we bring the buckets like that. So one day I had to go inside her house to get something. And when I went inside, I was shocked. Okay. So that old lady's outward her house, you've She set up was, all yeah, this. she was a friend of Krishna, a Karmi lady, but she was very helpful. Yeah, of course, Uh, she gets a big plate of prasad, but she was happy in helping. And okay, then yeah. you have the line of people, some bums, some, that area was not very super duper, It's Orange Blossom Trail was an interesting, road in there. ओके या तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जब प्रसाद का वितरण जब करने जाते थे तो वहाँ पे एक बूढ़ी एक अम्मा थी। तो वो बूढ़ी अम्मा के एक घर था। तो उन्होंने ऐसा मतलब मदद मदद के लिए उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा मतलब जगह दे के रखी थी कि मैं उनके घर के आगे ही वो ऐसा एक सब सारा टेबल का सेटअप करके वहाँ पे चम्मच रखना, बड़े बड़े बर्तन रखना था। ऐसे प्रसाद वितरण करने में आसानी होती थी, मदद मिलती थी। तो वो बूढ़ी अम्मा ऐसे मदद कर रही थी। तो प्रभु जी जब उनके घर के अंदर हुए गए तो वो मतलब शौक आश्चर्य रह गए। वो बताएंगे। यस प्रभु जी, व्हाट यू सॉ देयर। So I need something. And the lady said, you go get inside my house. No, she said, describe the place. So I went inside her house and there was so much junk in that house because I am a junk man, but that lady was a superstar. She has all the walls. Really, she was the avatar of junk. There was everywhere. The walls were piled up to the roof with, newspapers, magazines, toys, furniture, jars, ceramics, you name it. Anything, everything was there. You have toys from 2 years old up to 16 years old people, grandson or children, I don't know. It has, and then this is just the entrance. Then the living room, they have just the pathway was like a narrow pathway that you can go here, you can go there, but everything else is full of things. Full. This lady is being collected stuff for a whole century. Okay, maybe for like 50, 70 years. But she had it up to here with stuff. And I was thinking how she lives like this, and probably every single piece has a history that she came, oh, this is this from my grandson, or this is the magazine. I mean, and she was carrying this thing in her house. It's terrible vastu, It's the thing, everything was blocked, the whole energy was blocked. Nothing is flowing there. The only grace is just helping the devotees distribute prasad. That's the only light, in the whole situation. I could see it. वंडरफुल। ओके यस। तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि वो जैसे बूढ़ी अम्मा के जैसे वो उनके घर के अंदर वो एंटर किए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में हर एक कोने में, ऊपर से चाहे वो छत तक हो, नीचे से लेके छत तक, हर एक कोने में हर जगह पे पूरा जो एक पेय पदार्थ जो शराब कहा जाता है उससे ही पूरा भरा हुआ था। और और कोई जगह ही नहीं थी। ये तो स्टार्टिंग घर का एक शुरुआत थी। वो जैसे अगर अंदर जाए तो बहुत ही छोटा छोटा सा गलियारा, बहुत ही छोटी सी गली थी। और चाहे न्यूज़पेपर हो, फर्नीचर हो, झाड़ हो, हर जगह पूरा ब्लॉक ही होके रखा था। और उनको पूरा घर में इतना सारा सामान है, इतना सारी चीजें। तो वो उन बूढ़ी अम्मा को हर एक चीजें याद है कि ये कहाँ से आया था, कहाँ से अभी वो हर एनर्जी पूरे घर में उन्होंने पूरा एक जो कहते हैं एनर्जी हर जगह पूरा एक ब्लॉक होके रखा था। और इन सारी चीजों में जैसे उनके घर में कुछ ऐसा बचा नहीं, कुछ एक रे ऑफ होप जो कहते हैं वो कुछ नहीं बचा है। लेकिन उनके घर के आगे जो उन्हें जो जगह दी जो प्रसाद का वितरण करने के लिए, एक वही एक वहाँ पे एक कहते हैं ना एक किरण जो उन्हें दिखी, तो वहीं से एक उनके जीवन में वो उनको उद्धार करने के लिए। यस प्रभु जी। People. So this is called anarthas. Okay, don't be like that old lady. You'll be like her helping distribute prasad, but don't be like collecting junk. Junk outside the house, physical junk in the heart.
grievances in the heart that, you can forgive either the people or yourself for mistakes that's been done. You just let those junk go, because when you let that go, something new is coming. Sometimes the new thing is coming, is knocking at the door, is busy. There is an old grievance in here. This blessing cannot come in the heart. You see, this is the problem. You have to let this go so the new blessings can come in. We have to flow the blessings like a river of transcendental nectar from the Lord. वाह, यस। अभी जो प्रभु जी ने बताया, जो बूढ़ी अम्मा का जो पूरा उदाहरण बताया, इससे बताया कि ये सारी जो चीजें हम जो पूरा इकट्ठा करके रखते हैं, वो है हमारे अनर्थ। ये तो ये अनर्थ जो है पूरे इकट्ठे करके ये रखे, ये मतलब बाहरी रूप में हमें दिख रहे हैं, और एक जो होता है हमारे हृदय में भी हमारे होते हैं। हम कभी कभी हमारे से भी कुछ गलतियां होती है, जो हम खुद को भी क्षमा नहीं कर पाते, दूसरों को भी नहीं कम कर पाते, तो ऐसे सारी एनर्जी ब्लॉक होके रख जाती है, हो जाती है। तो हमें हमारे जीवन में अगर कुछ नया हमें जोड़ना है, तो हमारी पुरानी चीजें जो है उन्हें हमें खाली करना पड़ेगा, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो या फिर बाहरी रूप में हो। तो हमें खुद को भी क्षमा कर देना चाहिए, दूसरों को भी क्षमा कर देना चाहिए, और जो भी चीजें हम खाली कर देंगे, तब वो नई आशीर्वाद, नई ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में नया आगे आएगा। और एक वो फ्लो, एक कहते हैं ना, एक जैसे नदी में एक बहाव जैसे बढ़ता रहता है, वैसे आगे बढ़ेगा नए आशीर्वाद के साथ। यस प्रभु जी। So I'm just going now the Vedic culture, and I'm going to go a little bit over the time. Please forgive me, but this is so good. Neha, I'm sorry, because this is so good. I love this topic. So minimize simple living and high thinking. Minimize unnecessary complexity. Focus energy on spiritual growth, family service, and inner purification. You see, that is a good way to focusing our energy. ओके, अभी प्रभु जी ने बताया कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके तरफ हम बढ़ेंगे, और उसमें हमारी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी जरूरी की चीजें नहीं है, उसे हम कम करते जाएंगे, और हमारा जो ध्यान है वो उस तरफ पे लगाएंगे, जो हमारे आध्यात्मिक हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़े, हमारे अंदर की जो शांति है, हमारे अंदर का शुद्धिकरण हमारा कैसा होगा, हमारा और ध्यान बढ़ेगा। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। यस प्रभु जी। So the second part of Vedic culture, Dharma-centered life. When you have pleasure-centered life, how to enjoy more and more, this is Dharma-centered life, which is building, your inner strength, and every action is aligned with spiritual principles. That's how you become very strong spiritually. You have duty, respect, compassion, and responsibility. This is make you strong as a devotee. Become responsible members of the spiritual community. ओके, तो अभी जो दूसरा पॉइंट जो है प्रभु जी ने बताया कि हमारा जो जीवन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कि धर्म परायण होना चाहिए। हमारे हमारे जीवन का जो एक मध्यम, एक जो मेन पॉइंट होता है, वो होना चाहिए हम धर्म का पालन करें। तो इससे ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा हम खुद को और मजबूत बनाएंगे, हमारे अंदर से हम खुद को और मजबूत बनाएंगे, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और हमें कैसा होना चाहिए, हमें कर्तव्य पालन होना चाहिए, हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हमें संभालना चाहिए, और हमारी जो कंपैशन, एक दयालु जो हृदय होता है हमारा, वैसे हमें बनना चाहिए। यस प्रभु जी। So another topic for Vedic culture, simple living, high thinking, Dharma-centered life, respect for elders, teachers, and saints. This is important. I'll tell you in a minute. Vedic culture recognizes the wisdom must be received. Okay? Culture is transmitted through parampara. It said Lord Chaitanya, he was blessing people just by glancing at them. The glancing of the Lord. We have blessings through prasadam. The Lord food left for us. You see, the elders, they offer their blessings to us. You see,
and if they are in good position, the blessings can, protect our spiritual life. So you be, steady in your practices. You see, we seek blessings. We are a society that seek blessings. Guru Mata, Guru Pita Mata Devam. We seek blessings to the authorities in our life, and blessings are real. Now, the materialistic society, it say you create your own blessings. Ding. Yeah. But how much can you do this? It's like a circuit that's going on and it's going down, down, down. But if you get blessings, it's like you put the hand in the electric outlet. There's enough electricity there to get, a lot of blessings. You see, it's always flowing. We want that kind of blessings, not a closed loop. We want a loop that's open. It's coming from Krishna. It's coming from the elders. It's coming from the great Vaishnava servants of the Lord in different spheres of the universe. We want that kind of blessings, and it works. And that's how we advance in our spiritual life. We're not alone. ओके, या वंडरफुल। यस, प्रभु जी ने बताया कि आगे हमारा जो वैदिक संस्कृति है, इसमें हमने जो बात की थी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो बताया था पंडा, उसमें हमें और भी चीजें को हमें जोड़ना है कि हमसे जो बड़े हैं, हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो शिक्षक है, और जो सेंट्स जो है, जो साधु पुरुष है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और जो वैदिक कल्चर से हमें जो बुद्धि होती है, विजडम जो होता है, वो हमें लेना चाहिए। और ये हमें कैसे मिलेगा? हमारी जो गुरु परंपरा है उसके थ्रू हमें मिलेगा। और लॉर्ड चैतन्य जो है, भगवान चैतन्य जो है, वो अपनी जो कृपा है वो कैसे बरसाते, अपनी ग्लैंड से, मतलब अपने एक दृष्टिपात से वो अपनी ब्लेसिंग्स अपना हम पर बरसाते हैं। और ये सारी जो ब्लेसिंग्स जो होती है, हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान हम पर कृपा करते हैं, ये हमारी जो आध्यात्मिक जो हमारा जीवन है उसे एक प्रोटेक्शन, एक लाइक प्रोटेक्ट करता है उसे। और हमें हमेशा ब्लेसिंग्स की तलाश में रहना चाहिए कि हमें ब्लेसिंग्स कैसे मिले। हमें हमेशा इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे इलेक्ट्रिक का प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक, जैसे उसमें हम कैसे वो करंट फ्लो होता रहता है, वैसे हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ती रहेगी हमेशा। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम और आगे बढ़ते रहेंगे, और ऐसे हमें सभी का सम्मान करते रहना चाहिए, तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। यस प्रभु जी। So the culture is transmitted through parampara, and sometimes through parangrandpa, from the nonno and nonno, the grandfather, the father, mother. We have this knowledge, this culture coming. Like this is spiritual culture. Just like my wife, she's constantly telling how her father, brought Krishna first time, here in the house. He has a Krishna, playing the flute in here. Her mother doing the puja every day. She used to come and doing all the rooms, going with the incense. Now, this is the culture, and we assimilate it, and now we growing in our spiritual life. We're going to give this culture to the next generation after us. Even though we're young, we're preparing the next generation to learn from us, that culture, that spiritual culture that they see and they're going to imbibe in the hearts. ओके, हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसका जो ज्ञान है हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमारी जो परंपरा है वहां से मिलेगा, गुरु परंपरा से। और दूसरा जो है, हमारे जो पूर्वज जो कहे जाते हैं, हमारे दादा है, हमारे पिता है, हमारे दादा, हमारे परदादा है, तो उनसे भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी की जो वाइफ है, उन्होंने भी देखा उनके जीवन में कि उनकी जो माता थी, उनके जो पिता थे, वो सब धर्मपरायण, जो हमारे धर्मपरायण थे। तो वो सारी चीजें, वो कैसे रोज पूजा वगैरह करना होता था, तो माता जी ने वो सारी चीजें देखी और अपने जीवन में उस चीज को उतारी। तो वैसे ही प्रभु जी और माता जी का ये विचार है कि ऐसे ही हमें ये सारे वैदिक जो संस्कृति है, ऐसे हमें आगे बढ़ते जाना। हम सीखेंगे, जैसे हमारे उनके पूर्वज ने सीखा तो हमें दिया, हम सीखेंगे तो हम आगे देंगे। तो ऐसे ही हमें आगे इन सारी चीजों को बढ़ाते रहना है। ऐसे हमारा वैदिक कल्चर, जो वैदिक संस्कृति जो है, वो बचेगा और आगे बढ़ेगा। यस प्रभु जी। So
we should have a lifestyle based on devotion. That is the last before item. No, like respecting the cow, festivals, chanting, and community life, particularly festival. I love going festival. Today we went to the Sunday feast. We saw a beautiful Jagannath, took some nice prasadam, and we're gonna go to Mayapur now next Sunday actually, and we're going there prepare for the Mayapur festival. I hope I see all of you in there because it's a beautiful festival. Why not? We'll do everything like the golfers. They leave everything to see Krishna in the middle of the night. We should leave everything and go to the Mayapur festival. I know why it's so much good association, so beautiful. So like that. तो प्रभु जी ने बताया कि हमारा जो जीवनचर्या है हमें वो ऐसी बनानी चाहिए तो वो जिसमें भक्ति हो, डिवोशन हो। अभी और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारे जैसे गौ माता है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें हमारे जो भी उत्सव है उन्हें मनाना चाहिए, हमारा जो नाम जप है वो सारी चीजें करनी चाहिए। और प्रभु जी को जो फेस्टिवल जो उत्सव मनाते हैं वो उन्हें बहुत पसंद है। जैसे अभी प्रभु जी बताया कि वो अगले ही सप्ताह वो मायापुर जाएंगे, और जैसे जो भी और वहाँ पे उत्सव का जो है पूरे तरीके से वो एंजॉय करेंगे, और पूरे अपने लाइफ को और मतलब स्पिरिचुअलिटी और वो अपने लाइफ में और आगे लेके और आगे बढ़ेंगे, और वहाँ पे बहुत सारा उन्हें अच्छा एसोसिएशन और संग मिलेगा वहाँ पे। और प्रभु जी चाहते हैं कि हम भी वहाँ पे हम सब मिले वहाँ पे, ऐसे प्रभु जी की इच्छा है। क्या प्रभु जी? So I'm gonna recap a little bit. So simple living, high thinking, get the anarthas out, make your life simple. Dharma-centered life, okay? Every action aligned with spiritual principles. Respect for elders, teachers, and saintly persons, devotees. Lifestyle based on devotion, everything connected to Krishna. And true happiness is internal. Happiness comes from a pure heart, not external gadgets. Actually, the external gadgets makes you anxiety. Pure heart. Whatever you have a gadget or not have a gadget, doesn't matter. You should have a pure heart and focus on that. तो प्रभु जी ने बताया कि हम अभी जो भी हमने चर्चा की उस पर हम फिर से एक बार नजर रखेंगे। तो हमने जो जो सीखा है वो है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और हमारे जो भी अनर्थ है उससे हम कैसे बाहर निकाले, और हमारा जो जीवन होता है वो धर्म परायण, हमें धर्म को सेंटर रख के हमारी लाइफ को आगे चलना चाहिए, और हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे बड़ों की, हमारे जो शिक्षक है उनकी, जो साधु पुरुष है, जो भक्तगण है उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारी लाइफ में लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें भक्ति हो, ऐसी होनी चाहिए, और सारी चीजें जो भी है वो मैं कृष्णा से जोड़ के चलना है। और जो खुशी है, जो संतोष है, जो मतलब आनंद जो है, ये परफेक्ट वर्ड, आनंद जो है वो हमारे हृदय के अंदर से आता है, ना कि बाहर से आता है। बाहर जो भी गैजेट्स वगैरह उनसे नहीं आएगा, वो हमारे हृदय में अंदर से आएगा आनंद। यस प्रभु जी। So I'm giving the conclusion, okay? Give me like 5 more minutes, okay? Because this is beautiful. So the beautiful paradox, Vedic culture values simplicity, but doesn't reject modernity. Srila Prabhupada showed this perfectly. He used microphones, printing, presses, car, planes, recording, radio, even TV to spread Krishna consciousness. Principle, use everything for Krishna, yukta varagya. That is renunciation. We don't use it for a sense pleasure, we use for Krishna satisfaction. And that is using the modernity to serve Krishna. Okay? Modernity is not the problem. Misuse is the problem. Misuse of modernity. Okay? Smartphones can be a distraction or a tool for seva. Just like right now, I'm using my smartphone. I have the points of my class in here. We're using the computer and we're meeting from people around the world. This is beautiful use of technology. So technology can degrade one or can uplift one. So that's the choice we have.
and we should use wisely the choice. अभी प्रभु जी ने जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं कि हमारा जो वैदिक कल्चर, जो वैदिक संस्कृति है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमें एकदम सिंपल रहना है, एकदम सिंपल रहना है, और जो मॉडर्निटी जो आजकल जो चल रही है कि वो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि प्रभुपाद ने अपने अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए कैसे अलग अलग चीजों का उन्होंने उपयोग किया, और इन सारी चीजों को, मॉडर्निटी को भी उन्होंने पूरा मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में उन्होंने बदल दिया। जैसे प्रभु जी ने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे माइक्रोफोन है, कार है, एरोप्लेन है, टीवी है, रिकॉर्डर है, प्रिंटर है, इन सारी चीजों का यूज करके उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार उन्होंने और आगे बढ़ाया। और मॉडर्निटी जो है, ये कोई गलत चीज नहीं है, गलत चीज है उसका गलत उपयोग करना, उसका मिस यूज करना। अगर हम, जैसे प्रभु जी ने बताया कि जैसे हम फोन प्रभु जी यूज कर रहे हैं पॉइंट्स कुछ बताने के लिए, जैसे हमारे क्लास में हम लैपटॉप है, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इन सारी चीजों को, कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए हम उसका सही यूज करेंगे तो वो सही चीजें, मतलब सही रिजल्ट हमें देगा, और हमारी जो कॉन्शियसनेस जो है वो हमें, मतलब हमारी जो चेतना है वैसे और अपलिफ्ट होगी और आगे बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेगी, और ऐसे हमें ज्ञान, जो सही ज्ञान है वो मिलेगा। और ऐसे हम सारी चीजों का, हमें टेक्नोलॉजी जो भी आज मॉडर्न मॉडर्न लाइफ में जो चल रही है उसका सही उपयोग करना है। यस प्रभु जी। Conclusion. Neha, thank you for your patience. You've been very kind today. I just concluded now, okay? Because this is very important. Because I know all of you, people said, hey, but you're so spiritual, why are you using material things? So we should understand exactly where we stand, okay? And don't let people make fun of the devotees. So, conclusion, real culture, that which purifies the heart and connects us to Krishna. Modern culture offers convenience, but not fulfillment. It's convenient, but we're not satisfied with that. Vedic culture offers depth, purpose, and spiritual joy. And when used properly, modernity becomes a powerful instrument to spread Krishna consciousness worldwide. We are not against modern culture, we're against forgetfulness of Krishna. And that's the conclusion. तो अभी जो प्रभु ने बताया कि जो आज का जो हमारा टॉपिक था, वास्तविक जो संस्कृति है हमारी, वास्तविक जो कल्चर है उसे समझना, वो ये है कि हमारे 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 हृदय को हमें उसे उसका शुद्धिकरण करना है, और हमें कृष्ण को जो हम भूल गए हैं, हमें कृष्ण से हमें खुद को फिर से जोड़ना है। और ये चीज जो है हमें, व्हाट यू सेड, सॉरी प्रभु जी, अबाउट फुलफिलमेंट एंड पर्पस, Tell me again, Mata? Yes? दैट फुलफिलमेंट एंड पर्पस ऑफ आवर लाइफ। Vedic culture offers depth, purpose, and spiritual joy. Okay? And when used properly, modernity becomes a powerful instrument to spread Krishna consciousness. Is that what you asked? We're not against modern culture. We're against forgetfulness of Krishna. ओके। अभी जो हमारी जो मॉडर्निटी जो समय जो चल रहा है उसमें उसका हमें सही उपयोग करना है। वो कोई गलत चीज नहीं है। अगर हम, गलत तब होगी जब हम उसे सही से उपयोग नहीं करेंगे, तो हमें उसे सही से उपयोग करना है, और कृष्ण से हमारा जो रिश्ता हम भूल गए हैं उसे हमें फिर से जोड़ना है। और ऐसे ही हमें पूरा वर्ल्ड वाइड में, पूरे सब जगह पर इस चीज का प्रचार करना है, मॉडर्निटी का यूज करके। यस प्रभु। Okay, I thank you all for being there. I want to hear the feedback. Last time I got the beautiful feedbacks from you, and thank you, Kushbo, for that. You're very, intelligent. I appreciate that. Okay, so any questions with that? I can have some quick answers, and we'll be closed for today. I don't think I will be able to give the next Sunday because I'll be traveling. And I'll be in the middle of the hurricane of red for traveling, which is, it's amazing. Okay. तो प्रवीण कह रहे हैं कि किसी का कोई सवाल है यहाँ पे तो जल्दी से बता दीजिएगा,
चैट बॉक्स में अपना माइक अनम्यूट करके और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा प्रभु जी को। लास्ट टाइम पे शायद किसी ने नहीं दिया था, तो प्लीज जरूर देना प्रभु जी, अपना समय निकाल के अपना हमें इतना समय, इतना अच्छा ज्ञान दे, इतना बांट रहे हैं हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ। तो फीडबैक जरूर देना, भले छोटा हो लेकिन जरूर देना। और लास्ट अभी नेक्स्ट जो संडे आएगा तो उसमें प्रभु जी कह रहे हैं कि शायद हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि प्रभु जी ट्रैवलिंग में रहेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? Probably next Wednesday we still can have a reading. Prabhupada, we can have, but that is, but next Sunday I'm gonna travel on Sunday. Okay. Any questions, please? Okay. I have one question if nobody will ask. Okay, you ask the question. Yes. Prabhuji, many times we saw in our devotional life, like any other devotees who they are doing right and wrong. They don't know they are doing right or wrong, but we know, we see, we saw them like they are doing wrong, and many times we these things are popping our mind like yes, they are doing wrong, right. And if we want to save them, if we want to show them like they are doing wrong, they agitate and they got anger many times, and we want to like simplify those things, and we want to settle those things, but still not happen. So at that time, what we can do? Well, what you can do is before you can do, you start to think how is the best to approach this person or these persons, because to mentor somebody or even to advise somebody that is the same level of you is a science. And Prabhupada said you have to be expert in preaching. And if you make people angry with your preaching, then what is the point of preaching? You see, you have to be expert. And Prabhupada called the people rascals, and the people, yes, they nodding their heads, he could do it. And one time, one of the sannyasis gave a lecture and called people rascals and nonsense, and people got upset. And Prabhupada said, yes, I can do it, but you cannot imitate. So that is a limitation we can do, but we can be expert preachers by being delicate to approach people, to put in the equation that there is an ego in there. And you have to take the ego in consideration. Sometimes the people will take that and will take your valuable, or to say, advice. But you have to be sure your advice is solid. And if it's important, you may consult with some of your colleagues and your senior devotees to double check that what you think you should tell the person is valid. Once you got the validation, you approach the person expertly, you create a story and then you slowly put in front of the person. And if the person doesn't take that, you leave it. You leave that settings, because the person will learn. If the person is wrong, they'll learn from the good instruction, or let the material energy take over and teach the person, because the material energy is no much no much mercies in there. It teaches the hard truth, because sometimes we have to learn the hard truth. The ego is impede our understanding. So the material nature force the issue on the person. The person has actually, if he has a little devotion in the heart, he will understand. Yes, okay, I see what the mistake was. You see, because the great teacher is the material energy. Of course, the great teacher is Srila Prabhupada. But if you don't take that, you go to the material energy. The thing is, we do our job with sincerity, but we don't do Krishna's job. Let Krishna do his job, we do our job. You see, and Krishna's job is to take care of the devotee by using his Dadabi Buddhi Yogantam, his knowledge in the heart of that devotee, that you pray for the Krishna, please help this devotee. Or Krishna will use his material energy. Krishna has two sides. You got the material energy, you got the good instruction from the devotees, from himself, Krishna, you see, and then he's acting on the devotee. So you get out of the way, let Krishna work, you see, and be detached.
It's not your pain to be responsible for that devotee. You know, unless it's a child, your child, even if it's somebody's child, you know, it's the parents, you know, responsibility. You just try to be nice to tell, look, I see that, you know, there's a little bit problem there, you know, and maybe we can work this out. You always take the idea of the ego in the equation, because it's easy to look this, but the ego in there sometimes it stop you from bringing, you know, what, you know, your good instruction. And if you're a little bit junior, people take, you know, I would say, they take offense, you know, who is this devotee junior? But Prabhupada said we should take gold even from a dirty place. If it's a good instruction, yeah, we should take. Sometimes I learn from places that, you know, I thought, you know, well, you know, I'm not, you know, I don't try to put myself as super advanced that I know everything. And I try to learn from everywhere. And it's like a open, you know, radar to collect the information that can help me in my own devotional service. And that's good. We're in the same business here, to get rid of the false ego. This bad boy false ego. Yeah. Okay. Thank you so much, Prabhuji. Yes. So you become expert in approaching people, very sensitive to their understanding. Always consider there is an ego in there that you have to, you know, go around and massage the ego a little bit, you know, and then you give the message. And as you mentioned, we should detach from these things. If anybody don't want to correct themselves, herself or himself, but sometimes in our mind, I'm thinking that I'm making offense against them. So in that situation, what should I do on my regarding my thinking? Your thinking is not correct. You never do offense. You will sincerely try to help a devotee. You carry out the Krishna's instruction, the Guru Dev instruction. You never do offense. You see, try to help a devotee. Actually, you are a hero. You see, it's not offense, and Krishna will give you bonus points in the heart. It's never offensive to sincerely help a devotee. You know, never, because you know this is what we are. We are a society of Vaishnavas. We help each other. Okay. Very good. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Don't forget the feedback. I see all your smiling faces in there. Look.